Yesterday we talked about spinal nerves. So we have 31 pairs of spinal nerves. So we saw in the diagram, okay, the ending part of the spinal nerve is quada equina. So हम लोगों ने देखा था कि spinal nerves 31 पेयर है, ठीक है। तो लास्ट एंडिंग पार्ट है आपका वो है क्वाडा इक्वेना, ठीक है। चलिए अब आगे का देखते हैं। इस डायग्राम से समझिए, लेट्स अंडरस्टूड विद दिस डायग्राम। बेसिकली ऑलरेडी आई एक्सप्लेन, बट अगेन आई वांट टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी disease of neuro. We have to observe these signs. Okay, so ये बहुत बहुत important है। so जब भी हम न्यूरो एग्जामिनेशन करने वाले होंगे तो इस चीजों को जहन में रखना होगा। यानी रगों के बारे में अगर हम जानकारी हासिल करना है तो ये चीजें हमारे एकदम क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। सो आई हैव टू नो अबाउट दिस वेरी क्लियर माइंडेड। सो बेसिकली दिस इज द मजल। व्हाट इज दिस? दिस इज द मजल। ओके, so the information or the sense which is taking from this area to the brain is by receptor. Okay, so I will divide this. First is receptor. So receptor will receive the sense. What it will receive? It will receive the sense through this line. So this line is named dendroid. So this is the dendroid. Dendroid is connected to the receptors. Receptors receive the sense and it will pass the sense to this dendrite. Then the dendrite has cell body. So again, here we have the one cell body in the dorsal root ganglion. In the dorsal root is there and ventral root is there. Dorsal will take the information. Ventral, whatever information he will get, he will respond. Responding root is ventral root. Sensory root is dorsal root. Okay, so here we have the cell body. This is the dorsal root, this is the cell body. Oh, all is cell body. Here we have, from this we have the connection. Again we have the synapse, means the junction between one cell and another cell. And we have interneuron. Interneuron is the neuron which connect one neuron to another neuron. Okay, so this is the cell body and this is the dendrite and this is, and again we have the synapse. Again we have cell body. Okay, then we have, this is the ventral root, this is axon. Here we have the dendroid, here we have the axon. In between we have the cell bodies and interneuron. Again the ventral root, from this ventral root we have axon which give information to the muscle by effector. What we have? Effector. Okay, so this is the pathway. What we call, this is the pathway. How the pathway of sense to the cell body to the axon, effector. So this is the one pathway. How the sense will reach to the brain, and after that, how the body react and give the affection or motor work to the muscle. Okay, so let's again understood with in Hindi. So basically देखिए, जो भी हम सेंस आउटर एनवायरनमेंट से लेते हैं उसका रास्ता क्या है। देखिए कि मैं अब ये पेन यहाँ पे रखूंगा, विद दिस एग्जांपल यू विल अंडरस्टैंड। मैंने ये पेन यहाँ पे रखा, तो बेसिकली पेन इज टचिंग टू योर स्किन। ये पेन क्या है, आपके स्किन को टच हो रहा है। तो स्किन के ऊपर क्या है? रिसेप्टर्स है, क्या है? रिसीवर्स है, सेंस करने वाले, महसूस करने वाले रिसेप्टर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया रिसेप्टर, ये लिख लीजिए आर। तो आर, ये रिसेप्टर यहाँ पे है, सिर्फ यहीं पर सेंस होगा, लेकिन इससे आगे जाने के लिए, सेंस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ वायरिंग की जरूरत है ना। तो वो बन गया आपका डेंड्राइट्स। क्या बन गया? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। ओके, ये क्या बन गया? डेंड्राइट्स बन गया। तो अब डेंड्राइट्स तो सेंस लेकर आ गए, लेकिन अब असल फंक्शन कौन करेगा? आपका सेल बॉडी। सेल बॉडी तो है असल न्यूरॉन का, तो वो सेंस को रिसीव कर लेगा पूरा सेंस। अब क्या करना है आगे?
आगे ये इंफॉर्मेशन को अपन ब्रेन तक पहुंचाना है, आपके ब्रेन न्यूरॉन नर्व तक पहुंचाना है, न्यूरॉन सेल बॉडी तक पहुंचना है, फिर और एक यहाँ से इंटर न्यूरॉन है, यहाँ पे सेल बॉडी है, ये फैसला लेगा क्या करना है। ये क्या है, असल राजा है बैठे हुआ आपका, तो ये फैसला लेगा कि अब क्या करना है। तो ये पेन आपने रखा सेंस रिसेप्टर के थ्रू, डेंड्राइट्स के थ्रू सेल बॉडी तक गया, सेल बॉडी से फिर दूसरे न्यूरॉन में चेंज हुआ, वहां से एक सेल बॉडी ने क्या किया यहाँ पे, ये आपके बॉडी के बारे में फैसला लेगा। तो जब ये फैसला लेगा तो फैसले को किसके थ्रू देगा, उसका नाम है एक्सॉन। वो एक्सॉन क्या होगा, मोटार होगा। क्या होगा, ये सेंसरी होगा और ये मोटार होगा। सेंसरी का मतलब महसूस करना, ये महसूस करने वाला रग है, ये काम कराने वाला रग। मोटर का मतलब फंक्शन, जैसे मोटर है, मोटर क्या करेगा, जैसा वो काम करेगा वैसा पानी बाहर निकलेगा मोटर से। तो ये भी इसी तरह ये मोटर है, काम कराने वाला है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ से पेन है, अब यहाँ पे मैंने रखा, तो अब मेरा हाथ क्या करेगा, उसको पकड़ के ऐसा खोल के लिखना स्टार्ट करेगा। ये लिखना वाले फंक्शन क्या है, मोटार है। मेरे हाथ में जो पेन है, ये पेन है बोल के मुझे कैसा मालूम हुआ, ये सेंसरी है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो करा रहा है ये मोटार है, और ये हाथ को महसूस हो रहा है कि ये पेन है, तो ये क्या है, आपका सेंस। सो दिस इज द पाथवे। तो ये पूरा एक क्या है, एक चैनल है। इसमें से अगर इफ एनीवन ब्रेक्स हियर व्हाट विल हैपन, अगर इसमें से कुछ भी अगर ब्रेक हो गया चैनल, तो क्या होगा, एनीवन गिव द आंसर। कोई भी आंसर दे सकते हैं अगर आपको मालूम है तो। Functions not complete that. ओके, अदर्स। सोनू साहब फरमा रहे कि फंक्शन विल नॉट कंप्लीट, so which function, so it will if it affect। देखिए अगर यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट होगा, डायरेक्ट यहाँ पे अगर इफेक्ट होगा तो क्या होगा, ये भी कनेक्शन कट, ये भी कनेक्शन कट हो जाएगा। अब ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इस पे अगर आप, जैसा कि कोई एक्सीडेंट हो गया, मार लग गया, इफ एनी एक्सीडेंट अकर्स, इफ एनीवन फॉल डाउन, व्हाट विल हैपन, द स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी अकर्स। यहाँ पे मार लग गया तो स्पाइनल कॉर्ड इंज्यूर हो गया। तो इंज्यूर होने से क्या होगा, ये कनेक्शन टूट गया पूरा। जो मेन कनेक्शन है, ये मेन ट्रांसफार्मर है, वो आपका डैमेज हो गया। सो कनेक्शन विल लॉस्ट, नॉर इधर सेंसरी वर्क नॉर इधर मोटर वर्क विल हैपन। So patient have complete paralysis. So he doesn't able to move the hand, doesn't able to move his leg. Okay, he doesn't have any sensation. But some patients have sensation. Why this is, because the connection between the sensory neuron is not cutted. Okay, मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, जो सेंसरी न्यूरॉन का जो कनेक्शन है वो कट नहीं हुआ, लेकिन मोटार का कट हो गया। तो अब क्या होगा, पेशेंट को महसूस तो होगा, लेकिन फंक्शन नहीं होगा, वो काम नहीं कर पाएगा, वो पेन नहीं पकड़ पाएगा, वो हाथ को नहीं उठा पाएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सो यू हैव टू अंडरस्टूड, यू हैव टू एग्जामिन द पेशेंट वेन एवर ये न्यूरो केस comes to you. Okay, so I hope you understood this. So let's move. So this is the spinal cord. So ये क्या देखिए, आपके स्पाइनल कॉर्ड है। तो जो एरिया में डैमेज होगा वहां के सिम्टम्स आपको देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि सर्वाइकल रीजन, ये आपके गर्दन का रीजन है। सो दिस सप्लाई शोल्डर, आर्म एंड फोर आर्म एंड हैंड। ओके, some part of here we have what we have in the abdomen, between the abdomen. Okay, so this is cervical region, and from thoracic 1 to 12, abdomen, okay, upper respiratory tract, okay, heart. So this is all about this region. And lumbar region, pelvic region, lower legs, okay. So everything is related to the lumbar. So wherever connection will cut, so those area will affect. Okay, we have to remember. Next.
नेक्स्ट व्हाट इज हियर, नेक्स्ट वी हैव द स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस। अब यहाँ पे देखिए स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस है, इसके माने क्या है, इसके फंक्शन क्या है, इसका मतलब क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो what is meant by spinal cord reflexes? Basically, the reflex means action just happens and is part. This is so. A reflex is an involuntary response to a stimulus. What is meant by reflex? Reflex means it is an involuntary movement. Example: suddenly a mosquito bites you. What you will do? You will want to kill the mosquito with another hand, or you want to raise your hand. What happened to me? Okay, due to the bite of the mosquito, your hand raises. Okay, so that is stimulus. What is this? What is that? That is stimulus. Okay, that is stimulus. Okay, so that is due to the stimulus, the involuntary movement occurs. So those things known as reflexes. Okay, so that's these reflexes, from where the reflexes is coming, so from spinal cord. So if your spinal cord is normal, reflexes are seen. If reflexes are going wrongly, so that's the seen in the spinal cord injury patients. यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या है। स्पाइनल कॉर्ड का रिफ्लेक्सेस मतलब ये है कि जैसा कि सडनली आपको क्या किया, किसी मच्छर ने काट लिया, तो आप क्या करेंगे, हाथ को फौरन उठाएंगे, दिस इज रिफ्लेक्स। बाइट, सडन वो मच्छर ने काटा, आपने हाथ उठाया, तो ये हो गया रिफ्लेक्स। एक स्टिमुलेशन मिला, एक सडन कुछ आपको काटा गया, उस काटने की वजह से आपका हाथ उठ गया, तो क्या रिफ्लेक्स, यानी ब्रेन से ऑटोमेटिकली कुछ आपको बोले बगैर कुछ क्या होगा, क्या हो रहा है, वहां पे स्टिमुलेशन हो रहा है, वहां से कुछ सिग्नलिंग आ रहे हैं, तो ये सिग्नल्स को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सेस बोलेंगे। तो ये नॉर्मल है। An automatic action stimulated by the specific change of some kind. Spinal cord reflexes are those do not depend directly on the brain, although the brain may inhibit to enhance them. We do not have to think about these reflexes, which is very important as you will say. So ये क्यों है, ये क्यों है हमारे बॉडी में, ये रिफ्लेक्सेस देखिए स्पाइनल कॉर्ड को दिए गया था, ब्रेन तक आप उस ब्रेन तक सिग्नल जाना चाहिए, फिर ब्रेन वहां से रिस्पॉन्ड हो, फिर वहां से आके फंक्शन होने तक टाइम लग सकता है। तो इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड को ये जिम्मेदारी दे दी गई, जब भी इमरजेंसी कंडीशन होगी तो आपके रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट हो जाएंगे। So whenever there is emergency condition, spinal cord reflexes will work. So another example I will give you. Suddenly, some bike riders will fell down. So what will happen? Suddenly, their hand will come on the face. So anyone want to give the punch? So suddenly they will cover the face. Why? Because the spinal cord orders your hand in involuntary movement without your knowing. Your hands will want to protect your face. Okay, why this is happening? Because the spinal cord want to protect. ऑल्सो ये देखिए, और एक एग्जांपल दूंगा मैं, ये तो इंग्लिश में एक एग्जांपल हो गया, हिंदी में जैसा कि बच्चों को मारने के लिए टीचर छड़ी लेते हैं, तो फौरन क्या करते हैं, बच्चे हाथ खींचने की कोशिश करते हैं, या फिर पैरों पे मारने की कोशिश करते तो पैर खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से वो रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं। वो अपन ये हम लोग ये कहते हैं कि बच्चे या फिर देखने वाले को ये महसूस होगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं कि भाई ये जो मार लगने वाली है ये बहुत ज्यादा दर्द देने वाला है, तो क्या कर लो, तुम हाथ पीछे कर लो। ठीक है, तो ये ब्रेन से रिफ्लेक्सेस आ रहा है। सो नाउ वी विल डिस्कस रिफ्लेक्स आर। सो ये क्या पाथवे है, इसके बारे में जानेंगे। रिफ्लेक्स पाथवे, इसमें भी कैसा, ये देखिए रिफ्लेक्स पाथवे है आपका। रिफ्लेक्स पाथवे में 5 चीजें इन्वॉल्वमेंट होती हैं। कितने चीजें, इसमें 5 चीजें इफेक्ट होते हैं। रिफ्लेक्स आर इज द pathway that nerve impulses travel when a reflex is elected, and there are 5 essential parts.
So the in the reflect arc, reflect pathway, you have five essential elements. What are those elements or parts? One is the receptors, sensory neuron, central nervous system, motor neurons, and effector. Same things are given here. First is receptor, next is sensory neurons. Okay, next is central nervous system, CNS, MN, motor neurons, effector. Okay, first is this receptor will receive the information. Means they will also observe, always observe what happening. Okay, suddenly, if any hot thing is available, suddenly you put the finger, what will happen? Suddenly you will take out the finger from this hot water. Okay, why? The receptor suddenly send the message to the sensory neurons. Okay, first the receptors send the information to the sensory neurons. From the sensory neurons, central nervous system. From the central nervous system will decide within fraction of second. The central nervous system decide who. Spinal cord decide. Okay, spinal cord decide and advise to motor neuron, and motor neuron will advise to effector that you have to raise your hand. So this is the pathway. Okay, again we have one example here. One example is here. So we will talk about this example. Let us know, एक example यहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. Let us know the specific reflex that पटेला. पटेला ये एक घुटने की हड्डी का नाम है. ठीक है, पटेला इज ए knee bone. We know already, we studied in the previous classes. Okay, with which you are probably familiar. In this reflex, a tap on the patella tendon just below the kneecap causes extension of the lower leg. This is stretch reflex. So here what we will do, here we have the patella. This is the patella bone. Okay, this is the knee hammer. The neurophysicians use this knee hammer. Okay, so with the help of knee hammer, you just give the touch to this patellar bone. What will happen? This leg movement will seen. This leg will rise. ये जब आपने इस नी हैमर से यहाँ पे मारा, तो ये पटेला बोन पे मारने के फौरन बाद क्या होगा? ये जर्क आए, ये पैर आपका ऊपर उठेगा. यहाँ पर पैर आपका उठेगा. तो ये क्या है? स्ट्रेच रिफ्लेक्स बोलेंगे. इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेच रिफ्लेक्स. यानी यहाँ पे मारने से ये पैर आपका दूर जा रहा. द लेग विल राइज. So these types of stretch reflexes are known as stretch reflex. How this is happening? So we have the detail here. In the quadriceps femoris muscle, stretch receptors that detect the stretching procedure by stringing the patella tendon. These receptors generate impulse that are carried along. So देखिए यहाँ पे, this is the stretch receptors. यहाँ पे बैठे हुए हैं stretch receptors. Here we have the stretch receptors. So आपने क्या किया आपने नी हैमर से यहाँ पे मारा आपने. मारने के साथ ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करेंगे? ये स्ट्रेच करेंगे. इसको बाइसेप्स फेमोरिस मसल को रिलैक्स करेंगे. ठीक है, और आपके जो पटेला टेंडन है, ये देखिए यहाँ पे पटेला टेंडन है, ये पटेला का टेंडन को क्या करेंगे? ये श्रिंक करेंगे. श्रिंक करने के बाद ये बाइसेप्स फेमोरिस मसल क्या होगा? रिलैक्स होगा. रिलैक्स होने के साथ ही ये जैसा ये रिलैक्स होगा, ये पैर आपका रिफ्लेक्स होगा. ठीक है, तो ये पोजीशन होगा. ये मसल क्वाड्रिसेप फेमोरिस मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा. ये मसल यहाँ का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये रिलैक्स होगा. ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये पैर आपका ऊपर उठेगा, ये नीचे जाएगा. ठीक है, तो ये पैर आपका क्या होगा? नीचे जाएगा. और ये तो ये पैर आपका क्या होगा? ऊपर की तरफ आएगा. ये आपका मसल रिलैक्स होगा. So basically this is happen when
stretch reflex will occur. So you have to do this experiment. I think I will advise everyone, you have to do this experiment. Okay, so you can do yourself also. You can see that. Ah, so I have knee hammer here. All are able to see that. Yes, sir. Yes. So this is the knee hammer. This is the sharp end, and this is the flat end. So you have to just like that. And here they will see from here. Okay, like that. Okay, I will also. Uh, hmm, you can see here. I am putting my like this. Okay, I have reflexes. Okay, so my spinal cord is normal. Okay, sorry, excuse me. My light is. So basically, I think you understood how this is happening. The pathway. हम ये pathway को जानने की कोशिश करेंगे कैसा हो रहा है. देखिए सेंसरी नर्व, यहाँ पे जो सेंसरी नर्व है, इस सेंस को यानी जो आपने मारा उस सेंस को लेके गया, वो कहाँ लेके गया, सेंसरी न्यूरॉन के पास. देखिए यहाँ पे अंदर का इंटरनल जो हो रहा है यहाँ पे बताया जा रहा है. यू कैन सी हियर. So sense is coming to the dorsal root ganglion, dorsal root from the, this is the sensory root. It came to this spinal cord, spinal cord, spinal cord, and ventral root. This is the motor, and again this effector is there. So affected here. What is the result? So this is the normal pathway. The patella reflex is one of many used clinically to determine whether the nervous system is functioning properly. If the patellar reflex were absent in a patient, the problem could be in the thigh muscle, the femoral nerve, or the spinal cord. So what happened? The patellar reflex is mostly used in neuro examination. So ये patellar examination बहुत करते हैं न्यूरो फिजिशियंस, ताकि देखें कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. अगर रिफ्लेक्स नहीं आ रहा, इस तरह नहीं आ रहा, इस तरह नहीं आ रहा, तो क्या मतलब है, वहां पे फेमोरल नर्व में प्रॉब्लम है, और या फिर स्पाइनल कॉर्ड में. Further testing would be needed to determine the previous break in the reflex R. If the reflex is normal, however, that means that all parts of the reflex are intact. The testing of reflex may be first step in the clinical assessment of neurological damage. So, what we will do? We will do the reflexes whenever neuro any problems occurs. Okay. You may be wondering why you have such reflexes. These stretch reflexes, what is their importance in our everyday lives? So हम लोग सोचते हैं कि भैया रिफ्लेक्स का क्या काम है हमारी जिंदगी में. ठीक है, क्यों होना चाहिए रिफ्लेक्सेस, क्या काम है इनका. आइए देखिए, देखते हैं. द बॉडी परफेक्टली स्टिल, सॉरी, imagine a person standing upright. Is the body perfectly still? No, it isn't, because gravity exerts a downward pull. However, if the body tilts to the left, the right side of the leg and trunks are stretched, and these stretch muscles automatically contract and pull the body upright again. That this is the purpose of stretch reflexes. They help keep up upright without our having to think about doing so. If the brain had to make a decision every time we said ye wit, all our concentration would be needed just
to remain standing. Since these are spinal cord reflexes, the brain is not directly involved. The brain may become aware that the reflex has taken place, but that involves another set of neurons carrying impulse to the brain. So basically, here one example is given. You have to understood that uh, if you stand in a high altitude area or on the mountain, if you want to see above the mountain, if you want to raise your hand and one leg, if you are standing with the one hand, what you will do, your body will shake and want to put in your the level that you will not fall down. Okay, so this is the work of रिफ्लेक्स. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए रिफ्लेक्स का बहुत ज्यादा होना जरूरी है. जैसा कि आप किसी हाइटेड एरिया में चढ़ गए, बहुत ज्यादा थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर पे चढ़ गए या फिर कोई पहाड़ पे चढ़ गए और एक हाथ उठा लिया और एक पैर उठा लिए, क्योंकि हमारे अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी आप नीचे से देखेंगे तो नीचे गिरने की ज्यादा चांसेस होते हैं. ठीक है, नीचे गिरने की ज्यादा चांसेस होते हैं. क्यों? अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो खींचेगा, आप भाई नीचे आ जाओ तुम. ठीक है, तो इस वजह से जब आप हाथ एक पैर को उठाएंगे तो आपकी बॉडी क्या होगी, शेक होगी और कहेगी कि भाई आप यहाँ पे स्ट्रेट ठहरिए वरना आप गिर जाएंगे. ठीक है, यानी ऐसे कंडीशंस में जिसमें बॉडी का डेंजरस होना साबित होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, आपके बॉडी को प्रोटेक्शन देंगे ये रिफ्लेक्सेस. दिस इज द मेन पर्पस. So it will work in emergency condition. Okay, in emergency condition, the reflexes will work definitely. Next we have flexor reflexes. Flexor reflexes. What is meant by flexor reflexes? Flexors mean withdrawal. ये भी अलग टाइप के रिफ्लेक्सेस है. एक टाइप हमने पढ़ा स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ये आप पढ़ेंगे फ्लेक्सर reflexes are another type of spinal cord reflex. The stimulation is something painful and potentially harmful, and the response to pull away from it. If you are inadvertently touch a hot stove, you automatically pull your hand away. Flexor reflexes are three neuron reflexes because sensory neurons synapse with the interneurons in the spinal cord, which in turn synapse with motor neurons. Again, however, the brain does not have to make a decision to protect the body. The flexor reflex does that automatically. Spinal cord, the brain may know the reflex has taken place and may even learn from the experience, but that act requires different neurons, not the reflex are. Flexor reflex already you studied that. One example I have already given, that you put your hand on the hot pan, so suddenly you will reflex. Your reflex will work. Means you pull your hand. Okay, why this is happening? Because of flexor reflexes. Because of flexor reflexes. Okay, so these things we have to understood. So basically in flexor reflexes there are three neurons, but in sensory stress reflex there are two neurons. Okay, there are only two neurons, one neuron here, one neuron here. But in the flexor reflexes we have three neurons. Like here the one diagram is given like that. This is a three neuron. One neuron here, one neuron, one another neuron. Interneuron is there. So likewise, in the flexor reflexes, three neuron will work. Okay. In stretch reflex, two neurons. Okay, we have two neurons. So we have to understood this concept about reflexes and spinal cord pathway. So very important. So tomorrow we will start the brain
and their parts. Another we have the boxes. After completing this class, means this everything we will complete the boxes. Okay. So any doubts you have, you can ask.